I welcome you all for this live webinar on science. So let's see that how many of you have joined today. Yes. Um, all right, guys. Hi, everybody. Hi. How are you? How is your health? And how much prepared do you feel that you are as of now? All right. Nice to see you all. All right. So students, as I've said that this is a free science webinar, but the examination is on 20th of February and today is 18th already. So what are we going to discuss today? Today we are here to discuss two important things. That is the time management tips and the presentation tips. See, I know that you have done very well with your content. You have gone through the entire NCERT, you have solved the mock question paper, the sample paper, and everything. And you are prepared with the content. But we are here to help you make from ordinary to extraordinary by adding and giving you some tips and tricks regarding the time management and presentation tips. So, without wasting any time, guys, let's get started. So, in today's video, what we are going to do that I have divided the video in three different parts. That is, first I'll be giving you an update on the marks distribution, chapter wise, subject wise, and the question segment wise. Then we'll be quickly discussing the different presentation tips that is the key of our video. And finally, we'll be discussing the time management during the examination and after the examination for your further subjects, right? So, how we have divided general science. General science has been divided into three different categories, that is physics, chemistry and biology, right? Now let's quickly see that marks को किस तरीके से हमने distribute किया है, right? So when I talk about the unit wise topics covered and marks distribution, here are the five different units. That is, we have chemical substances, nature and behavior, that carries 25 marks. Then we have living world, that consists of biology, carrying 25 marks. Then we have natural phenomena and electric current, carrying 12 and 13 marks. And then we have natural resources, carrying 5 marks. So can anybody tell me in the comment section that what is the total marks of the different units? Yes. I think there's some network glitch and the comments are taking time to load. So we'll be doing one thing, that will be stopping the session here and we'll be waiting for next 2 minutes for you to comment on the comments box and we'll see. All right, guys. Yes, I want to see in the comment section that how many of you are prepared with the examination. What is the total marks? Yes, guys, come on. All right, guys. Can I see in the comment section? Okay, okay. So I think that you have a lot of doubts regarding the presentation pen color. We'll be discussing them one by one. Don't worry, we'll be addressing all your issues. But before that, our main thing was to cover the marks distribution, right? What we are here to cover, first one was the marks distribution. Now, this is a unit-wise marks distribution. Now, this was done as per the latest sample paper released by the CBSE, right? Now,
the same using the same sample paper, we have also found out the marks distribution of different areas or the different questions. जी हाँ, ये साइंस का ब्लूप्रिंट है जिसमें कि अब आप क्या देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है. तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 20 questions, 20 objective type questions we are seeing. And again, I'll be telling you this is as per the latest CBSE sample paper, right? This is the estimated weighted. Now, objective type questions से कितने 1 markers आ रहे हैं? We are seeing 21 markers, जिसमें कि 16 questions are direct MCQ while 4 are assertion reason type. Then short answer question, that is very short answer question, means this is short answer type 1, wherein each question carries 2 marks. And how many questions do we see from here? It is 6. Then we have short answer question, that is short answer question type 2. One was type 1, the other one is type 2, which carries, in which each of the question carries 3 marks. तो कितने questions ऐसे हमारे पास में? 7 questions. Now, then we have the long answer type question. So we have 3 long answer type question, that each question, how many marks does each question carries? It is 5 marks. Then we have CBSQ, that is case based study question. So here we have each question carrying 4 marks, and similarly we have 3 questions. तो अभी यहाँ पे देखो कि लॉन्ग आंसर टाइप 3 है, केस बेस्ड क्वेश्चंस 3 है, यानी एक कितने हो गए? केमिस्ट्री से एक, फिजिक्स से एक, एंड बायोलॉजी से एक. एंड सेम गोज फॉर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, राइट? अभी what do we see, that how many total questions are there? Yes, so the total number of questions is 39, right? Now, let's move on to the next thing, that is how is the questions distributed among different subjects. Again, this is an estimated, I'm saying it again and again, this is an estimated blueprint. I'm not saying that this is the one which will be coming to your examination, राइट? तो अभी देखो केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चंस होंगे और एक होगा असर्शन रीजन टाइप. सिमिलरली शॉर्ट आंसर टाइप 1, यानी कि एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स कैरी करता है, इट विल बी 1 फ्रॉम केमिस्ट्री. Short answer type 2 will have 2 questions from chemistry, and long answer type question will be 1, and then case based question also 1. Total will have 13 questions from chemistry carrying 25 marks. Again, this is as per, yes, comment section में मुझे बताओ कि this is as per what? This is as per our CBSE sample paper, right? This is the estimated weightage. अभी फिजिक्स का देखते हैं. तो फिजिक्स में MCQs थोड़े कम है, 2 questions, 2 MCQs और एक assertion reason है, यानी कि 3 questions 1 marks के, 2 questions रहेंगे 2 marks के, 3 questions रहेंगे 3 marks के, 1 question from 5 marks and 1 question from case based study question. Yani total we have 10 questions carrying 25 marks. Now, just come to biology. We'll have 7 questions, 7 assertion reason, sorry, 7 MCQs and 2 assertion reason question, means total 9 questions from carrying 1 marks. Then we'll have 3 questions carrying 2 marks, 2 questions carrying 3 marks, 1 question of long answer type, and 1 question from case based study question. So in total we'll have 16 questions that carries 30 marks. So students, I hope that this blueprint is clear, and this blueprint is as per the CBSE sample paper. Now let's see that what is the chapter wise weightage. भाई बस सब्जेक्ट को एनालाइज करके हमें थोड़ी छोड़ना है, हमें तो चैप्टर वाइज भी देखना है, राइट? कि भाई हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगेन एज पर दी CBSE sample paper, this is very important thing, right? तो अभी देखो, this is a quite a tedious chart. अभी इसको हम लोग एक ये तो एक टेबल है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि इसको एक चार्ट में, पाई चार्ट या फिर एक टेबल के फॉर्म में, एक्सेल शीट के एक टेबल के फॉर्म पे देखते हैं, ठीक है? तो ये तो है हमारा टेबल. अब हम इसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, राइट? अभी देखो परसेंटेज वेटेज, इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस के टॉपिक्स के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो व्हाट डू यू सी एट द टॉप? वी सी 12.50%. कौन सा चैप्टर है भाई? लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली लाइट, this is the chapter that I've been telling time again and again कि भाई light is something that you can't take lightly, right? So light has always been one amongst the top scoring subjects. So light को तो ध्यान रखना है. Again it has 12.50%. Then we have
We have 11.25%. So here we have carbon and compounds, so chemistry here. Then the other important topics include the chemical reactions and equations carrying 7.5%, and we have electricity carrying 8.75%, and magnetic effects of electric current carrying 7.5%. Rest all the chapters carry around 6.25%, and human eyes and the colorful world has gotten a very less weightage in the sample paper that was of around 2.50%. So as also blueprint ये नहीं बताता कि आपको इतना ही पढ़ना या इतना ही ध्यान देना पर्टिकुलर चैप्टर पे. ब्लूप्रिंट हमें ये बताता है कि दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, एक स्पेक्यूलेशन बताता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस या इस पैटर्न में या इस वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट ईयर क्या हमने देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वेटेज वाज 12.5%, राइट. बट अभी देखो इस साल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से मेटल्स एंड नॉन मेटल का वेटेज इज नियरली टू द हाफ, राइट. सो द चैप्टर्स एंड द वेटेज कैन वैरी. ठीक है. सो नाउ this was all about the percentage weightage. Now we are done with the first part of the video, that is the marks distribution and their analysis. So how many of the students have understood this thing and are with me? Just type a smiley in the comment section. I want to see a lot of smileys. Yes, yes, you guys, very good, very good. All right. Thank you everyone for your responses. Now what we have to do is that we have to understand that how we can be extraordinary. How can we get that extra, right? See, as of now, we are ordinary. Our preparation is ordinary. We have done a lot, right? But everybody has done a lot, right? It's not just you have done. Everybody who is going to appear for the examination has done their preparation. So we call that preparation that, okay, the preparation is ordinary. Now we have to add this extra to our ordinary. So what we are going to do? We are going to be that extra by doing extra in our presentation. So let's quickly have a look that भाई अपने presentation को किस तरीके से रखना है, आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, so that we are on the top of this game. All right, so here we go. So students, as you all know that examination is day after tomorrow, right? That is on 20th of February. तो बच्चों content अगर बात करें तो NCERT की बात करें, if I talk about the NCERT and the sample paper, इसे तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगा दिए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो हम तो अपने कंटेंट के साथ में बहुत ही अच्छे से रेडी है. अब हमें करना क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना होगा, हमें आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए. और क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन से पहले, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो कंटेंट हमारा तगड़ा है. अब हमें क्या करना, अब हमें ध्यान देना हमारे प्रेजेंटेशन पर कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिखें कि वी गेट वेरी नाइस स्कोर. जस्ट एग्जामिनर हमारा कॉपी देख रहा है एंड देन ओके फाइन, ओ ये दीप ज्योति की कॉपी है, ये सुधांशु की कॉपी है, या फिर ये तनु की कॉपी है, तो चलो ये देखो आंसर्स इतने अच्छे से नीटली और क्लीनली लिखे हुए हैं कि एग्जामिनर को भी टाइम नहीं लग रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग वेरी नाइस स्कोर. So I firmly believe in all of you that you guys have done your content very nicely. Now what we have to do is to understand the presentation tip. So the tip number one is that whenever you're writing the answer should be structured and crisp. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड और क्रिस्प का मतलब क्या होता है कि इफ एग्जामिनर इज आस्किंग कि नहीं भाई तुम्हें आंसर 400 वर्ड्स में लिखना है, तो इंश्योर कि 350 टू 400 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट हो जाए, या फिर 420 या 30 वर्ड्स तक जाए, राइट. यू कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, या फिर अगर एक पेज में आंसर आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ 5 मार्क का क्वेश्चन, राइट, तो आप क्या करोगे कि एक जो एग्जामिनेशन की शीट मिली है, एक से 1.5 शीट इज सफिशिएंट फॉर अ 5 मार्क का क्वेश्चन, राइट. तो उतने में ही स्टिक करोगे अपने आप को. तो वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर को किस प्रोसेस में फ्लो करवाना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड क्रिस्प. ऑल्सो देयर शुड बी प्रॉपर बुलेट्स एंड इंडेंटेशन. तो भाई मैम ये इंडेंटेशन, ये तो बहुत ही नया सा शब्द बोल दिया आपने, व्हाट इज दैट. तो बच्चों इंडेंटेशन का मतलब है कि जैसे मानो कि हमने आंसर लिखा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्वेश्चन लिखा, उसके आंसर्स में हमने 2-3 लाइन लिखी, अब हमें लग रहा है कि इसके अंदर में कुछ और बुलेट पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, बुलेट पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट नंबर 2, बुलेट पॉइंट नंबर 3. What you're seeing here that we have left a proper gap, we have left a proper gap from this
and then we are writing the bullet points, because these are the sub points of answer number 2, right? So this is something that we have to do in our examination. तो जिसने देखो बात प्रेजेंटेशन की बस इतनी है कि खाना तो सब बना रहे बट हर कोई मास्टर शेफ में नहीं जा रहा, राइट? तो मास्टर शेफ में जाने वाले लोग क्या करें, वो खाना बनाने के साथ में कंटेंट तो झगड़ा है ही उनका, साथ में दे आर प्रेजेंटिंग इट वेरी नाइसली. सिमिलरली यू हैव टू डू इफ यू वांट टू बी दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, राइट? तो what we are going to do, we are going to write the answers in bullets and we will follow the proper indentation. तो यहाँ पे देखो एक example है. Here what we have, the question was regarding the two characteristics of a good fuel, right? तो इसने characteristics of good fuel are ऐसे करके लिखा, and 1 point, second point, third point. The student knew 3 points, तो इन्होंने 3 points ऐसे लिखे, and then the answer is here, while the sub points you see थोड़ा थोड़ा अंदर है, right? This is what you have to do, right? Always remember one thing, that whenever you are writing the answers in the examination, ये जो margin है, the margin that is there in the left side वाले margin के बाहर में ही आपको question का number लिखना है, and be very neat with the question number, because question number is something that will help the examiner to differentiate between the different answers, right? तो question number बहुत ही अच्छे से clearly और nicely लिखो. एक और बात जो हम इस पेपर में देख करके हमें पता चल रहा है कि this answer, the handwriting is very nice. अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मैम, तब क्या करें? देखो आपको हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत नहीं है, अभी एक दिन में आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो. बस इतना ध्यान रखना है कि आंसर जो भी लिख रहे हो नीट और क्लीन रहे, मतलब एक एक लाइन का गैप छोड़ रहे हो. जब आंसर्स और क्वेश्चंस चेंज कर रहे हो तो दो दो लाइन का गैप छोड़े, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आंसर शीट देख रहा है तो उसे लग रहा है कि हाँ भाई बच्चे ने क्लीनली लिखा है. मतलब आपकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस लेजिबल होनी चाहिए, कि पढ़ने योग्य होनी चाहिए, कि जब एग्जामिनर आए, व्हेन ही और शी इज रीडिंग द क्वेश्चन और द आंसर शीट, शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट द स्टूडेंट हैज रिटन, राइट? दिस इज समथिंग वन point. Next is that you have to underline the keywords in your answer sheet, and this is going to make your answer sheet, this will be changing your level in the examination. तो भाई अभी क्या करना है कि ये बात को समझो कि एग्जामिनर जब आप आपके एग्जामिनेशन में आता है, वो जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो या कर रही है, तो दे डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू द एंटायर आंसर, रीड ईच लाइन अगेन एंड अगेन ऑफ एवरी स्टूडेंट, राइट? सो व्हाट दे लुक फॉर इज सर्टेन keywords. They look for certain keywords, and if they find those particular keywords in the answer, okay valla, they'll just tick and give you full out of full, right? So what we have to do, we have to take care of keywords, right? Keywords हमें ध्यान देना है, and then we have to highlight the keywords. अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि यार हाईलाइट किससे करें, which pen, ऐसे as आप लोग जो कमेंट कर रहे थे पहले कि which color pen we should use, blue, black, orange, pink, green, do we have to use that? No. Black, do we have to use that? nahi. So just stick to blue and black pen. Entire content whatsoever you're writing should be done in blue pen only. Entire content whatsoever you're writing should be done in blue pen. If you have time and you want to make it more nice, what you can do, with black pen you can just write the heading. Okay? Now what about highlighting? So for highlighting, what you can do is that use a pencil. दो फायदे. पेंसिल से क्या होगा कि अगर आप इरेज कर रहे हो, अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है, बाद में आपको इरेज करने का ऑप्शन रहेगा, एंड देन यू कैन पुट इट देयर. एंड देन ब्लैक पेन के साथ में क्या होता है कभी कभी कि इंक स्पिल हो जाए या फिर कुछ अगर हो जाए, पेंसिल के साथ में चीजें इरेजेबल रहती हैं, तो पेंसिल हैज अ बेनिफिट. सो व्हेनेवर यू आर हाईलाइटिंग यूज पेंसिल. यू कैन आल्सो यूज अ ब्लैक पेन बट पेंसिल इज मोर प्रेफरेबल. ठीक है? पेंसिल फॉर हाईलाइटिंग, ब्लू पेन फॉर राइटिंग द आंसर्स, and black pen only for the heading if you wish to. बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे बोल रहे थे लास्ट टाइम कि मैम हमारे स्कूल में मना किया गया है ब्लैक पेन के लिए. हाँ बेशक से मना किया जा सकता है, क्योंकि द एग्जाम स्कूल डज नॉट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम बाय चेंजिंग द कलर्स ऑफ द पेन, राइट? डायग्राम्स बनाने फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड द पेंसिल, ठीक है? बट पेन के साथ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यू कैन नॉट ड्रॉ नीड डायग्राम एंड देन दैट इज आल्सो नॉट अलाउड. तो दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, एज पर दी सीबीएसई रूल, पेन ब्लू पेन यूज करो. बॉल पॉइंट पेन है तो बेस्ट है, बिकॉज जेल पेन में इंक स्पिलेज की इशू आ सकती है, राइट? सो यूज अ ब्लू पेन एंड देन फॉर हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग यूज अ pencil. I hope this is clear. Just type Y in the comment section if it is clear to you.
All right. So we have discussed a lot about pen. Now let's talk about the other aspect of presentation, that is drawing the diagrams. So now diagrams are an integral part of science, right? तो आपको क्या करना है, in fact biology, even in physics also you can draw diagrams. तो अभी आपको क्या करना है in examination, that wherever you feel that it is necessary or important for you to draw the diagrams, and do not encourage the imaginary diagrams. Imaginary diagrams is not encouraged. Just draw wherever you feel necessary. Like यहाँ पे देखो, the student, the question was regarding the Maxwell's right hand thumb rule, right? So the student felt that okay, fine, if he or she draws the diagram of right hand, so it will be giving a nicer picture to the examiner. It is just going to enhance his or her presentation, and that is the reason why the student became a topper, right? So this is the right hand thumb rule. So diagram wherever you feel necessary, you draw it, but do not encourage the imaginary diagrams, right? Now, whenever you are drawing the diagram, this is very important, student, that you should label it properly, right? Whenever you're drawing the diagram, you have to label it properly. अभी लेबलिंग का मतलब क्या है कि व्हाट्स एवर द थिंग्स आप लेबल करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सारी चीजों को बहुत ही प्रॉपरली लेबल किया गया है। एंड नाउ विच साइड यू विल बी लेबलिंग, सो द मोस्ट प्रेफर्ड वे इज द राइट साइड। जहां पर भी आपने डायग्राम बनाया, पेज आप इनफ लो, देयर इज नो, सीबीएसई में ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आपको पेज नहीं लेना, आपको जितना शीट लगे कि आप ले सकते हो, लो आराम से। देयर इज नो बाउंड इन, देयर इज नो, क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज इन दैट, आप उसको आराम से ले सकते हो, राइट? तो अभी आपको क्या करना है कि डायग्राम को बहुत ही अच्छे से नीटली ड्रॉ करना है, and try to draw the diagrams on the right side of your right side of the screen, that is जहां पर भी आपने डायग्राम ड्रॉ किया उसके राइट साइड में आप उसको लेबल करो, right? Now labeling can be done in capital letters, and if in case it is not possible, if if you are in a rush, so you can label it in the running handwriting as well. That is not a problem. All right. All right, students, so we are done with the diagram. Now let's talk about the space. See, as I've told you in the first presentation tip, that whenever we are going to write the answers, how will the examiner know that okay, you have entered the answer and you're not drawing the margin? What you have to do, you just have to leave the space. क्या कर रहे हो आप? You have to leave the space. यहाँ पे देखो कि let's say the question number was 2, यहाँ पे 2 का second question she is answering, and then she has written the answers in the bullet points, and then now second question is done, second part of the second question is done, and then she's moving on to the third question, right? So what she is doing, she has left one line. Now, since everything is a part of one single question, so she has left just one line, right? Again, third question, the rule of indentation. First point she has written here, and then second point she has written here. Again, she didn't write here the first point, right? Because here if she would have written, then it would have given a misinformation. So that's what you have to do कि examination में indentation का properly बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो, right? So this is something that you have to be very vigilant and take care of, right? All right. Yeah. So we have Lokvardhan. Hi, Loki. Hi, Lokvardhan. We have Ravinder. We have Loki. We have Poonam. Hi, everybody. I hope everything is fine at your end and you are able to understand what I am saying. If yes, just type Y in the comment section. All right, guys. Thank you so much. Now, what we have to do is that we have to leave enough space after every answer. If in case we don't have the ruler and the scale to draw the ruler and the pencil, if you are, see, best method kya hai? Ki after every answer you are drawing a line, but if in case you don't have that much of time, leave spaces. ठीक है? Single question, if there are different questions within a single question, leave one line, right? While if you're changing the question, whenever there's a change in question, leave two lines. Done? All right.
Now, this is a very important thing. Whenever you get the MCQs, whenever you're answering the MCQs or the assertion reason type question, just don't write the options. Don't write just the option A, B, C, D. Just don't write that. With the option, what you have to do, just write the complete answer. Okay, what option is the correct? So, okay, for here it was 2 and 3. Then for C, it has said acidic and strong acid and weak base less than 7. So, try writing the entire option because this helps the examiner to understand, okay, fine, if in case you would have messed up with the correct option number, at least if you would have written the correct answer or the response, you will get the full marks. So you have to write the complete option. All right. Now, whenever you're writing the differences, this is also very important. Whenever you're writing the differences, always remember that the differences should be written in a tabular form and in point wise. Point number one, like here, there's a difference between blood and lymph. She has written point number one. Point number one, she has differentiated between both the things. And then once the first point is done, they are leaving space for the second point so that the points does not merge with the other further points, right? So इस बात का ध्यान अच्छे से रखना कि once first point is done, leave enough space, then you start with the second point, leave enough space, third point, and then fourth point, and you complete your answer like this. So this is important कि differences को tabular form and point wise way में ही लिखो, right? Now, this is something the master stroke. Examination में अगर आपसे गलती हो गई, तो how you are going to strike off your answer? Let's say I was supposed to write the word, okay, so here we have Poonam. Chalo, we'll take the name of Poonam. So let's say I wanted to write Poonam in my answer. I could not write it. मतलब मैंने कुछ spelling mistake कर दी. Now I have to strike it off. तो अभी क्या करेंगे हम? What we have to do? Are we going to strike it off like this? Like this? Again and again? This is highly objectionable. This will does not look good. This doesn't look good at all. This is what the student has done, right? What we have to do instead, if we would have written this word Poonam and we want to strike it off, just strike with a single line. This is the correct approach of striking off any answer. तो एग्जामिनेशन में इस तरीके की अगर आप हरकत कर रहे हो तो डेफिनेटली द एग्जामिनर विल गेट पिस्ड ऑफ सो यू विल बी नॉट गेटिंग एज मच स्कोर he or she might deduct half marks and you'll not know that, right? And every marks count, right? So try to just strike off like this child has done here. She made a mistake, so she decently had a cut and it doesn't even look like that she has made a she had striked off the answer. So that is what we have to do, right? We should not strike multiple times. Now next, whenever you have a question of numerical, this is something that is very important. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि इसमें फंसते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल मिलता है तो दे जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि हाउ टू अप्रोच. देखो, एग्जामिनेशन में पेपर विल नॉट बी वेरी लेंथी. साइंस पेपर हैज नेवर बीन दैट लेंथी. यस, ट्रिकी, डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दैट कि हाँ ट्रिकी हो सकता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है. इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, आराम से उसको छोड़ दो, बाद में अप्रोच करना. बट एग्जामिनेशन को शुरू करो अपने क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से जो जिस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट? तो अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, मार्क्स कैसे मिलेंगे? देखो, सीबीएसई में हमेशा स्टेप मार्किंग का सिस्टम है, राइट? तो व्हेनेवर यू गेट अ न्यूमेरिकल, जस्ट राइट टू थिंग्स यू हैव टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ. वन इज गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है, एंड देन यू राइट इट. यहाँ पे देखो कॉन्केव मिरर का सारा डेटा इट हैज गिवन, एंड व्हाटएवर इज नॉट गिवन, शी और ही हैज मेंशन्ड क्लियरली अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है? नाउ while solving the question, she or he has taken a very nice care of putting the units. The units are very important. The units has been marked properly and the answer is enclosed in a bracket or a box. So the answer should be enclosed in the box, right? So this is very important. So once you write the answer, first start by writing the given. Whenever you are approaching a numerical, given se shuru karo, approach and then solve the numerical, and then whatsoever answer you get, ensure that you have marked the right, you have written the right units and you have enclosed the answer in a box. This is important. Now let's talk about the rough work. देखो, रफ वर्क में क्या होता है ना,
खासकर फिजिक्स के पेपर में क्या होगा कि यू विल गेट सम न्यूमेरिकल जिसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ यू टर्न द पेज एंड देन डू द न्यूमेरिकल, इट विल बी डिफिकल्ट. तो दो अप्रोचेस है, यू कैन डेफिनेटली टर्न द पेज, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज वेरी प्रेफरेबल. क्या आप करो कि जैसे ये आपकी आंसर शीट है, दिस इज योर आंसर शीट, राइट? तो लेफ्ट साइड का मार्जिन इज फॉर क्वेश्चन नंबर, राइट? सेंटर इज फॉर द आंसर्स, द सॉल्यूशंस. राइट साइड में एक मार्जिन ड्रॉ करो एंड राइट द हेडिंग एज रफ. ठीक है? सो लेट्स से यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट हैज अ न्यूमेरिकल. यहाँ पर रफ में भी क्वेश्चन नंबर 5 लिखो और न्यूमेरिकल को सॉल्व करो. ठीक है? तो जब आप लास्ट में जब आप आंसर को चेक कर रहे होगे कि हाँ हमने सही आंसर लिखा है, नहीं लिखा, या फिर कुछ गलती की गुंजाइश है, तो आप जहां पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप वहीं पर अपना सोल्यूशन या रफ वर्क को देख सकते हो, एंड देन दिस इज गोइंग टू सेव योर टाइम. So this is a time saving hack and it was a pro tip by Deep Jyoti ma'am. So this is the rough work hack जो आपको करना है. आप चाहे तो अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है जहां पर आंसर लिख रहे हो वहीं पर रफ करना, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप लास्ट पेज में करो. बट लास्ट पेज में व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, क्या आपको ध्यान रखना है कि देयर यू राइट द क्वेश्चन नंबर बिफोर डूइंग द रफ वर्क. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा तो एटलीस्ट अगेन आप जब लास्ट पेज में जा रहे हो तो अगेन यू कैन रीचेक इट. एंड ऑल्सो दिस इज गुड फॉर द एग्जामिनर कि हाँ, अगर क्या होता है कि अगर बच्चे ने सही आंसर लिखा, लास्ट लास्ट में शी और ही हैज गलती से ही गलत आंसर लिख दिया, नंबर्स गलत लिख दिए, तो एग्जामिनर विल सी द रफ वर्क, तो उसमें भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है? तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो. नाउ एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे आएंगे जो बहुत सारी शीट्स ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो बहुत सारी शीट्स नहीं ले रहे होंगे. तुम्हें शीट लेने वालों से या जो नहीं ले रहे हैं शीट, उनमें से किसी से भी डरना नहीं है या खुद को बॉदर नहीं करना है. हो सकता है कि जो ज्यादा शीट ले रहा है मे बी उसने ज्यादा गलतियां की हो, तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड एट ऑल बाय द नंबर ऑफ आंसर शीट्स यू और योर फ्रेंड्स आर टेकिंग. राइट? नाउ this is the presentation summary. If you want, you can take a screenshot. I'll be waiting for 3 seconds. And here we go, 3, 2, and 1. Now, we are done with the presentation tips. Now, it is very important that you manage your time well during the examination. So, by time management, kaise kar? See, this is the blueprint again as per the CBSE sample paper. What do we find here? That how much this blueprint tells you कि कितना time किस questions को devote करना है. Like if you have an objective type question, you will devote 2 minutes each. That counts to be 40 minutes. Then if you have a short answer type, very short answer type, 6 minutes each, that counts to be, sorry, 6 questions are going to be there, so you will spend 3 minutes each. Similarly, short answer type 2 will have 7 questions and then you will be spending 6 minutes each. For long answer type questions, you'll be spending 10 minutes each. And for case based question, again, you'll be spending 10 minutes each, because case based question के जो paragraphs होते, they are long and then you should spend your time there. This comes out to be 2 hours 40 minutes. बाकी के 20 minutes में क्या करना है? 20 minutes का अगर divide बताऊं तो 5 minutes you have to save for your revision, and the rest 15 minutes you will be utilizing. Maybe you want to take the extra sheet, you want to do other things, you are stuck in a question, so the 15 minutes is extra. Now this is during the examination से पहले भी हमें 15 minutes मिलते हैं, उसमें क्या करना है? Let's see. तो जो पहला 15 मिनट्स मिलता है, ऑलवेज कीप योर पेंसिल whenever you get the question paper. ठीक है? क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद you get the 15 minutes, get your pencil. अब क्या करना है? The first thing is mark the difficult question. How you are going to mark? Like this? No, examiner अगर देखेंगे तो they will take your copy or the question booklet. So what you have to do is that just put a dot. Just put a dot that nobody can see, right? But you should know that, okay, yeah, this is a question that you have gone through. Put a dot, whatever the question, just go through the entire question paper and put a dot at every question that you're feeling or finding it difficult, that at this moment miss nahi ho raha. And do not attempt those questions first. Last में आराम से, when you gain the confidence by doing the simple questions, तब जाकर के difficult questions को attempt करना है, right? Now, जिसमें क्वेश्चंस में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें यूनिट्स लिखा हुआ है या फिर जिसमें द वर्ड नॉट हैज बीन यूज्ड, मे बी इन एमसीक्यू और द असर्शन रीजन, पुट अ डॉट देयर. पुट अ डॉट देयर एज वेल. पहले तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हाईलाइट किए, उसके बाद हमने डॉट लगाया जिसमें नॉट या एमसीक्यूज, जिसमें यूनिट्स लिखा हुआ, बिकॉज यूनिट्स आर समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में यूनिट्स को आपको ध्यान रखना है, राइट? देन
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस रहते हैं, 5 का A B एंड देन यू हैव एन और क्वेश्चन, सो चूज द ऑप्शनल क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर. ठीक है, this is done. And then if the time permits, go through the entire MCQ. Thoroughly read each and every MCQ. And trust me, this is doable because I did it for my board examination. So what I used to do is that I used to go through the entire MCQ, and whatever I felt like, this is the correct option, dot, dot, dot. तो just add a dot. Don't tick mark. भाई नहीं, पेपर छीन लिया जाएगा आपका. तो what you have to do, just put a dot mark कि भाई ठीक है, these are the MCQs that हाँ ये सारे questions हैं. ठीक है, एंड देन वंस द एग्जामिनेशन की टाइमिंग स्टार्ट्स, तो जो भी आपका अप्रोच है, यू हैव टू अप्रोच विद 5 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क और 3 मार्क, जो भी आपका अप्रोच है, यू स्टार्ट ऑफ द सेक्शन. नाउ व्हेनेवर यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन, व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज मेंशन द सेक्शन नेम. सेक्शन ए अंडरलाइन, बी अंडरलाइन, लाइक दैट. सेक्शन का नाम सेंटर में लिखो, मिडिल में, एंड देन यू अप्रोच द राइट द क्वेश्चंस. ठीक है. Now, future examinations के लिए कुछ tips and tricks. See, this whatever we have completed was done for during the examination. ठीक है, future examination में क्या करना है, future examination में, आने वाले examination में study schedule बनाओ. ऐसा भी नहीं बनाना है कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे, नहीं पढ़ पाते हैं लोग. 8 घंटे का बनाओ जो आप कर सकते हो. ठीक है, make it for 8 hours at max, and अपनी capability के हिसाब से बनाओ. Then whatever your tasks are important, उसको prioritize करो, and then have enough breaks, because breaks are also important ताकि आपका mind rejuvenate कर सके. Then जो भी आप पढ़ रहे हो उसको summarize करो, and then try making a mind map so that you understand everything. This is all for the future study tips and tricks. Then जो भी आपको एग्जामिनेशन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को करो. अभी देखो एक दिन बचा हुआ, इफ यू वांट यू कैन डू वन मोर प्रैक्टिस पेपर, एंड दैट टू एट द सेम टाइम, सेम टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन की टाइमिंग क्या है भाई, इट्स 10:30 to 1:30. सो प्रैक्टिस, और इफ अगर आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस पेपर लगानी है तो इस टाइम पर ही एक प्रैक्टिस पेपर लगा लो, राइट. दिस विल हेल्प यू enhance your muscle memory. Then whenever you need, you can take help from your teachers and peers. अपना हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैव बेटर स्लीप एंड eat whatever balanced diet you can get, and I know that your parents are taking care of your food, so eat nice food and sleep well, because examination में आधी नींद के साथ जाओगे तो जो आता है वो भी नहीं आएगा, right? तो अच्छे से सो एंड अच्छे से खाना पीना खाओ, right? Then see student, just have one thing in your mind, that whatever you have done so far is sufficient. You have done enough. Now it is the time to reap your results, right? So you have done enough effort, and just have that positive outlook towards your examination, and have confidence that हाँ भाई मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, and I know that I will be performing good. Just have that positive outlook towards your examination, and I'm sure that you are going to do great. Now, just before the examination, be confident. अब भाई ये confidence कहाँ से आएगा? इजी क्वेश्चन पेपर से. जो भी क्वेश्चन आप चुन रहे हो, प्लीज इजी वाले क्वेश्चन चुनो. जैसे जैसे आपने इजी क्वेश्चन 4-5 इजी क्वेश्चन लगा दिए, तो भाई आपका देखना कॉन्फिडेंस अगर 70 पर था, तो जब आप कर रहे होगे तो 90 पे चला जाएगा. दैट इज अ 20% इंक्रीज इन योर कॉन्फिडेंस. तो उस हिसाब से करो कि फर्स्ट यू डू इजी क्वेश्चन, एंड देन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको लास्ट के लिए रखो. लास्ट में भाई टाइम मिलेगा, ऐसा थोड़ी पेपर लेंदी थोड़ी आएगा. तो बी कॉन्फिडेंट. Also, before the examination, do not talk much to other people, because you never know किस बात से आपके कॉन्फिडेंस को ये हो जाए. एग्जामिनेशन से 1 घंटे या आधा घंटा पहले ट्राई टू बी इन योर मॉन्क जोन. आराम से आप खुश रहो, बस कि स्माइल करते रहो कि हाँ भाई आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, एंड यू आर गोइंग टू डू गुड. आई एम गोइंग टू डू गुड. दिस इज योर मंत्रा. आई हैव डन वेल एंड आई एम गोइंग टू डू गुड इन द एग्जामिनेशन. दिस इज योर मंत्रा. चैंट इट, एंड देन पक्का आप आकर के मुझे बोलोगे कि दीपज्योति मैम आपके सेशन ने लिटरली मुझे हेल्प किया, राइट? सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड, राइट? तो ज्यादा किसी से बात नहीं करनी एग्जामिनेशन से पहले. कुछ ऐसा नया गाना नहीं सुन लेना है कि भाई वही गाना एग्जामिनेशन में लूप में चल रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था. तो वो चीजों का ध्यान रखो, एंड इजी क्वेश्चन से शुरू करो. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग होगा, नहीं करना है. चैलेंजिंग क्वेश्चन को करेंगे ना लास्ट में, करो आराम से. ठीक है, अगेन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, हेल्दी फूड खाओ, और अच्छे से
sufficient sleep लो, because sleep is very important. So I wish you all the very best for your examination, and examination के बाद मुझे comment section में आकर बताओ कि how did your examination go, and मेरे कौन से presentation tips से आपको help हुई. So with that, thank you everybody.